Live class. Hello. Hello. Good evening, students. So we'll start our classes about the orientation classes in library and information science. As you know, previously we have discussed about the academic libraries, and in that we have discussed, as per the syllabus, Foundation of Library and Information Society. The first article we have discussed on the types of libraries, ba jo amaro library prakar, ebong sethere ame we have discussed about the characteristics of the libraries. The characteristics of the libraries, as we have discussed, there we have covered, as you know, that basically the support teaching and curriculum needs, and promote information literacy and lifelong learning. Oh, sorry, that is this is about the functions, but we have to go to that where it is. Oh yes. So as we have there we have discussed about the characteristics and funding and types of libraries. As you know that how many types of libraries as per the academic libraries concerned. Academic libraries has been separated in major basic three types of libraries. They are like your starting from school libraries, college libraries, and your university libraries. So the type of functions we'll discuss today, but we know that how to support or what is the real characteristics of a library in their level we have discussed. आमे आलोचना करिचे जे स्कूल लाइब्रेरी रे हमकु कोन कोन फोकस करिया पड़िबो, जेमति कि सबुथर सबु एकेडमिक लाइब्रेरी रे शिक्षा ग्रंथागार मानकरे हमकु तांकर कोर्स एवं टीचिंग क्लास को सपोर्ट करिया पड़िबो, एवं तांकर केमिति फंड रेज रहउची, हाउ वेयर द मनी इज कमिंग फॉर लाइब्रेरीज एंड हाउ टू मैनेज, से सब विषय आमे आलोचना कले. टुडे आज आमे विल डिस्कस टुडे द मेजर एस्पेक्ट द फंक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी. आज यू नो हमर मेजर होची जे एकेडमिक लाइब्रेरी कार्य कोन, कार्यावली कोन, व्हाट शुड वी फॉलो फॉर आवर एकेडमिक लाइब्रेरीज. बेसिकली you will see that, as you know, that academic library कहले school, college, university, से सब library रे कौन करा जाए बा सेठी कौन, what is the major function of the library बा तारा कार्य कौन. So for that reason the first one is support teaching and curriculum needs. Teaching means जो माने शिक्षा प्रदान करूचंती, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ आर दी स्कॉलरली एस्पेक्ट्स, बस से माने शिक्षा जने दउचंती एवं शिक्षा जने ग्रहण करचंती. तेनु तांकु एंड सेटा कोन होची ना अकॉर्डिंग टू द करिकुलम. करिकुलम कहले तुमर सिलेबस वाइज तुमर आज जेंती ओरिएंटेशन कोर्स होची फॉर दिस प्रोग्राम तुमको ऑलरेडी सिलेबस दिया आइची, सिलेबस अनुसार हमें पढुचे. सो लाइकली करिकुलम नीड्स, करिकुलम रे जहा जहा मैटर अच्छी, जहाँ फैक्ट्स अच्छी ताकू सपोर्ट करके आमे लिटरेचर दबा. लिटरेचर कोड पाइबा, लिटरेचर कौन ना, लिटरेचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज
that means they are coming from different sources. बहुत source ରୁ ଆସୁଛି ଯେମିତି କି books, non books and other type of materials ବା ତୁମର electronic materials, digital materials and types of materials. There are so many. Non books रे कहले हम जेମିତି maps, films and there are so many type of things we will read about. So you see that amku kon कहला the needs to provide resource for lecturers. Lectures means those who delivers, the lecturers, the professors, they are taking the classes, and for that reason what they require, the resources, the information resources they require. You know, there are types of information resources: primary information, secondary information, tertiary information. In the reference services, reference information services or documentation aspect आमे ताकू भलो भाबरे आलोचना करिबा. किंतु एठी हला that need to provide resource. आमर जे लाइब्रेरी, those who are the librarian in the academic library, semane kon karibe na they have to provide resources. What resources? Resources of knowledge, informations. So anything usable, semane जोटा को use करिबे आमे सेटू source रानी के resource करा, either from book, non book, digital, electronics, जिते वैद्युतिक माध्यम, multimedia, your internet, whatever, जहाँ जहाँ तंकर दरकार आमे तंक कौन करिया ना provide करिया. Assignments and class readings. Assignments, students are giving the assignments. They will be provided with different tasks, questions, answers, projects. जहाँ जहाँ सब करिवे तेणु सेथि पई जहाँ दरकार whatever they require आमे ताकू provide करिवा. Class readings, as you know, class रे teacher माने class नौ चोंती है, students माने class करू चोंती. So सेठी की ना that what happens? What is a library? Library is also a basic space where people can learn more. What? ना जो जिनिसो से माने classroom रे teacher को तो पाई परिवेनी, जोठी से माने निज बही भितर पाई परिवेनी, सेठी कौन करिवे ना they will come to the library. Librarian रोल होची जे particularly से जो student अच्छी, student रा कौन problem अच्छी ताकू जानी कि से ताकू provide करिवो, and that will be very successful. They will be happy with the required content, with the required informations. So classroom reading will be helpful by the librarian. Librarian माने classroom रे कोटे student रा कौन दरकार बा student ताकू special reference सर्विस माने देई पारंती, से माने तांको तार special interest नहीं की ताकरो जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू से माने provide करिवे to support the classroom and also to the lectures, including reserves or course packs. So whatever there, we have to reserve the informations, but for whom it is required, and also for the course pack. A course pack, what are the informations requires, what site you have to go electronically and also आमे physically जहाँ दरकार आमे ताकू provide करिवा. Help integrate information resources into the syllabus. As you know, the syllabus कहले जहाँ सा तुमरा सेतरे fact अच्छी से अनुसारे आमे integrate करिवा. Because there is also repetitions and from other sources other computer as a aspect. Computer तुम्हारा collection अच्छी, but in library science it is also related. So आमे ताकू कौन करिया integrate करिवा बा ताकू आमे मिसेइवा बा सेमान कोठू आमे computer sources रू बा computer section रू आमे books or any reading materials आनी के आमे ताकू provide करिया. will integrate आमे देखिबा जे कोन कोन एथरे अछि से अनुसारे आमे ताकू कोन करिबा ना आमे हमरो project करिबा. So will help integrate information resources into the syllabus. So then can be there will be complete resourceful information services to the library. Complete heijibo information sources ta. Facilitate research, offer advanced reference services. So
as you that you know, that is we come to know that teaching and curriculum needs to support. You have to support. That is gone. Now we have to come to the facilitations. Facility, as you know, that where the research is going, mainly in universities or in also in some colleges. So when there is research, we have to support that. There are different aspects of research, that is advanced reference services. What do you mean by reference services? Reference services means informations required by the scholars or the users we are providing, that is personally known as reference services. You have to know what is reference services. So reference services is the services provided personally to the users. Personally to the users. So literature searches. What do you mean by literature search? So it is a very important aspect of research. Whenever you are selecting a topic, आमे जेतबेले गोटे रिसर्च करछे बा गवेषणा करिया पे जाउछे, आमे कोन करूछे ना आमे तापे गोटे टॉपिक टे देखुछे बा इवन टॉपिक सिलेक्शन कला बेले मध्य आमे लिटरेचर सर्च करूछे बा आमे विभिन्न बही बा बुक्स, नॉन बुक्स बा तुमरो जर्नल्स बा तुमरो that we say the magazines आमे सबुठी के जाउछे. तेनु आमे ताकू कहूछे जे these are the literatures, where the literature is there, where there is information. So आमे कोन करिबा ना ताकू आमे सर्च करिबा. तेनु लिटरेचर सर्च कहिले, लिटरेचर कहिले जे कोनसी पाठर तार साहित्य बा तार विषय जहाँ लेखा अछि. मानकर आमे लाइब्रेरी विषय पढ़ुचे, तेणु लाइब्रेरी विषय जहाँ लेखा है से लेखा को आमे कहूचे लिटरेचर. तेणु जो टॉपिक उपरे जहाँ आमे चाहूचे सीटा होची तार जो लेखा ताको आमे कहबा लिटरेचर. एवं ताको आमे सर्च करी एग्जैक्ट जो जिनस आवश्यकता अछि केबे से फैक्ट्स आरंभ हैला. मानकर आमे जाउचे जे क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए एस्पेक्ट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम. तेणु से सब्जेक्ट रो लिटरेचर केबे स्टार्ट हैला, कोठी स्टार्ट हेची, केबे कोन हेची, कोन एडवांस हेची, जेतले आमे ताकू कंप्लीट आलोचना करूचे. सो दैट इज कॉल्ड एज लिटरेचर सर्च. Literature searches. Now it is very interesting, is the interlibrary loan. You know, that is otherwise we say in IL, inter ILL, ILL. So it is known as interlibrary loan. What do you mean by? Every library is not sufficient to provide every book to every user. As you know, 5 laws of library science. Books are for use. Amar jo lekhai mane as per the Ranganathan kon कहछन्ति जे books are for use. So if you are not using your users are not using your books that are in your library, you should search your users. Every reader has its book. So तुम reader कोठी अछन्ति. So there is a better exchange of books will be possible. Means तुम्हें मानकर गोटे स्कूल ले अच्छा, तुम स्कूल ले गोटे लाइब्रेरी अच्छा, तुम लाइब्रेरी किसी बही अच्छी, से बही तुमरो विशेष भाव में यूज होनी, किंतु अदर स्कूल जो स्टूडेंट्स अच्छे तांकर दरकार पड़ुछि. तेणु तुम्हें कौन करिवो, तुम लाइब्रेरी बही को तांको लाइब्रेरी की दबो, तांकर जहाँ दरकार तुमर जहाँ दरकार तांको ठारू आनिबो. सो देयर विल बी ए प्लान एंड प्रोग्राम. आमे ताको कहूचे library cooperation. So these are coming, interlibrary loan is coming, library cooperation services. So we'll discuss, but ame koche
that is resource management. So we will come to that one, that is document delivery. What do we mean by document delivery? So whenever someone wanting something, what we are doing? Na, we are just providing it. That means आमे जेतबेले तांको प्रोवाइड करछे, we are providing, someone is searching for a book, आमे भी ताको बही प्रोवाइड करछे, someone providing some articles other than books also, आमे गोटे कि जानिले गोटे टॉपिक ऊपर किछि इंफॉर्मेशन जानिबा पे चाहिए तो आमे कोन करछे तांको प्रोवाइड करछे, आइदर तमे इलेक्ट्रॉनिकली आमे प्रोवाइड करिया डॉक्यूमेंट डिलीवरी करि परिबा बा पोस्टल वेयर बा मेल वेयर करि परिबा आउ तुमे जानिछो जे ईमेल एंड अदर थिंग्स बाय दैट social media social group through रे करि परिया. So that are different ways, but physically तो आमे करि परिया book providing books journals like that whenever they are coming to the library, or you can provide by some messenger or something else. Then another is bibliographic management. What do you mean by bibliographic? Bibliography, that means where we are getting the information about the reading materials, that is known as, or the information or the address of information materials, address of books, address of journals, address of websites, whatever, anything, any kind of literature you are using, the addresses means where we can locate. Catalog is a bibliographic tool. So there are different bibliographic services, so we are providing, so where we are giving the addresses. So we have to manage with the tools like catalog is there and OPAC is there. So there are different kinds of aspects. So in this content we have to use EndNote, Zotero, and support for grant funded research. Another aspect is support to grant funded research. So whenever you know that in the universities grants are coming for particular research projects, so there we have to support with our literature or information, that is how that the research can be particularly fulfilled. So in research universities, they play a key role in data curation and research data management, or we say it is the RDM. So these are things is more required. That means आमे जेतले रिसर्च करूचे बा गवेषणा करूचे, गवेषणा समय रे आमे कोन करूचे ना आमे ताकू सपोर्ट करिबा. So as a for the data curation and research data management, आमे कोन करिबा ना डाटा आमे प्रोवाइड करिया, समय we have to bring the data, we have to collect the data, we have to organize the data, and we have to circulate the data, or we have to provide the data services or information services to the users, those who require, and for the particular project. And that is research data management. For research you have to provide बा आमर जो गवेषणा करूचे गवेषणा पे जो तथ्य दरकार आमे तांकू पर्टिकुलरली प्रोवाइड करिया. एंड मैनेजमेंट यू नो दैट वी हैव टू administrate the every information. We have to collect the information, we have to organize the information, आमे तो संगठित करिबा, एबे आमे ताकू सर्कुलेट करिबा बा तारा आमे तांकू प्रदान करिबा बा तांकू जोगै देबा. तेणु ये व्यवस्था को आमे कहूचे जे रिसर्च डाटा मैनेजमेंट. Another important is your promote information literacy. It is a very important aspect. That means, and another is also lifelong learning systems. So let us understand promote information literacy. What do you mean by that?
आमे कोन करिबा ना वी हैव टू जनरेट आमे कोन करिबा ना से माने केमिति इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी रु पाइबे बा लाइब्रेरी तांकु केमिति हेल्पफुल हबो आमे बेसिकली तामे के कहूचे जे यूजर एजुकेशन आमे यूजर मान को एजुकेट करिबा दैट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस एकेडमिक library or library the academic librarian they have to educate they have to तम कोन करा जिवो ना हमर लाइब्रेरी की सर्विस अछि हमर लाइब्रेरी केमिति यूज करि परिबे हमर कोन कोन फैसिलिटेशन अछि आमे तांको सब प्रोवाइड करिबा बाय दैट वे आमे कोन करिबा ना प्रमोट इंफॉर्मेशन लिटरेसी व्हाट आर इंफॉर्मेशन सर्विसेज हमर एब्स्ट्रैक्ट अछि इंडेक्स अछि कैटलॉग अछि करंट अवेयरनेस सर्विस अछि SDI अछि so CS अछि so whatever service we have or आगु को आमे किछि बेटर सर्विस दोउचे कि हमर सोशल मीडिया रे सर्विस दोउचे कि whatever services we are giving आमे तांको प्रमोट करिबा बा तांको ओरिएंट करिबा तांको आमे बतेइबा so promote information literacy कहले जेमति जे आमे तांको आमे ठीक भाबरे शिक्षा देबा जे से माने लाइब्रेरी के केमती ठीक भाबरे यूज करि परिबे सो अनदर इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग conduct workshops so we have to also give them that life long learning system how they will adopt because knowledge is the power without knowledge we can progress everywhere you have seen the advancement or progress or promotion it is because of knowledge so how you will improve the knowledge the main thing you have to learn those who read they lead जो माने बहुत पढ़ंती जानंती से माने आगु को जानती तेनु सेथि पई तुमे कोन करिवो ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम तांकु दबो एवं फॉर दैट रीजन कोन करा जिवो ना जो माने यूजर्स अछंती जो माने रीडर्स अछंती तांकु नै कि आमे कोन करिया वर्कशॉप्स करिया बा से माने को नै कि वी विल हैव ए ग्रुप डिस्कशन वी विल मेक ए कॉन्फ्रेंस सो व्हाटएवर दैट इज द प्रोग्राम्स आमे तांको ना अवेयर करिबा बा तांकु आमे कॉन्शियस करिबा जे हाउ दे कैन बेटर यूज द लाइब्रेरीज then orientations as we are orienting tomorrow eta parikha pe ame orientation karuche orientation class karuche senti orientation sessions so we will make orientation sessions so that means how much they are having the knowledge so how they can have more knowledge about the use of library services so how they can take more help from we have having some libraries have translation services some libraries have selecting generation of information services so there are so many kinds of services tenu ame semanu kon kariba ne different session re ame tanku update kareba je whatever we have the whatever services we have amar ja services am dauche tenu credit bearing courses so as you know जो कोर्सेस सब अच्छी से भी आमे तांको क्रेडिट बियरिंग कोर्सेस आजिकल जो लेवल लईची द वी आर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट यूजीसी एज पर द यूजीसी नॉर्म्स सो बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट बियरिंग कोर्सेस वी हैव टू सपोर्ट दिस क्रेडिट सिस्टम कोर्सेस and one-on-one consultation on research methods so we have to see very specifically what research is going who is doing the research and what is his content बा ताकू कौन दरकार आमे ताकू स्पेसिफिकली आमे स्पेशलाइज्ड वे रे ताकू आमे ट्रीट करिबा दैट इज अ काइंड ऑफ मेथड और रिसर्च मेथड फॉर दैट रीजन वी हैव टू सपोर्ट आमे ताकू सपोर्ट करिबा database use there are different kinds of databases medical databases agricultural databases so scientific databases there are so many databases ताकू केमती हमें यूज से मारे केमती यूज करियो से जानचंदी कि नहीं बा बेटर यूज केमती करिबे ताकू हमें करिबा citation styles there are different citation styles so how
they will cite their that is about the bibliography. So whenever they are writing articles, they have to give the reference, they have to cite the where they have brought the information. So that is, there are different kinds of styles, so that also will provide. Another aspect is your plagiarism. You know what is plagiarism? That is the that it protects plagiarism, that we will have a protection for original writing. So one should not copy. So there are softwares who check the plagiarism. If you that is a kind of software. In that, if you put your article, तुम्हें यदि तुम आर्टिकल टा से तुम्हारा प्लागरिज्म सॉफ्टवेयर देलो, ताले से जणाई दबो जे तुम्हारा ओरिजिनलिटी केते अछो और तुम्हें केते कॉपी करिछ। तेणु सेथरे अछि जे केते परसेंटेज ऑफ कॉपी इज अलाउड आउ देन दैट इज देयर। सो आमे कोन करिबा ना आमे से विषय भी तांकु जणाइबा, जणाइते आर्टिकल लेखुची जे सेथरे ओरिजिनलिटी टा से केमिति जानी पारिबे, तांकर ओरिजिनलिटी केते अछि कोन अछि, तारा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आमे ताकू पछरे आलोचना करिबा। देन अनदर इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो एनी इंफॉर्मेशन, whether how much it is required, whether it is right, the content is right, is exact or not, so we can evaluate. So as you have known that evaluation policy is there. Evaluation of we have already you might have read in your classes that evaluation of reference sources, evaluation of encyclopedias, where how many contents are there, how many items are there, how it has prepared the index, how is that making the content. So all things. So what kind of information is coming, we can evaluate, but we can evaluate, make the evaluation, and by that way we can inform the users that what is the use of the things and how they will be helpful for them. Help kariba. Preserve institutional knowledge, maintain preserve institutional knowledge, maintain institutional repositories for theses. So this is another important another important one, that is preserve institutional knowledge. So there are institutions, means the academic institutions. Academic institutions means I'll mean the universities. So in universities ba vishwavidyalaya manankare kon hochi na we are producing knowledges by means of research. By research re ame kon korche na gobeshona madhyam re ame bibhinno thesis, dissertations सब जिस आमे कौन करुचे ना प्रिपेयर करुचे बाय प्रोजेक्ट वर्क आम प्रिपेयर करुचे. सो दैट आर दी इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज बा सेटा होची इंस्टीट्यूशन मानकर तांकर प्रॉपर्टी बा से मानकर सेटा होची धन सेटा होची नॉलेज इज द आम जे कहूचे ज्ञान मान बा ज्ञान होची गोटे प्रॉपर्टी बा गोटे तांकर सेटा निजर धन. तेणु प्रिजर्व इंस्टीट्यूशनल नॉलेज आमर जहाँ आसूची ताकू आमे प्रिजर्व करिबा बा ताकू आमे रखिबा फॉर यूज फ्यूचर यूज बाय. मेंटेन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज फॉर थेसिस. आमे कोन करछे ना जे रिसर्च करूचंती जे पीएचडी करूचंती से माने थेसिस सबमिट करूचंती. जो थेसिस आसिला तमे इलेक्ट्रॉनिकली बा फिजिकली सब तुमे कोन करिवो ना रिपोजिटरीज तैयार करिवो बा तुमे ताकू आर्काइव्स करिवो बा ताकू समवेयर यू हैव टू कीप फॉर फ्यूचर यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड फॉर फ्यूचर स्टडीज बाय द यूजर्स. Then dissertations like this, thesis, dissertations, faculty publications. So you say what is that gote faculty ba gote section ro gote department ro
teachers किंवा students, they will publish the articles in some journals, पत्र पत्रिका सेमानकर आर्टिकल्स लेखा आसीबो से लेखा गुड़ाक तुम्हें पर्टिकुलरली रखिबो कहीं ना सेटा होची से इंस्टीट्यूशन ना टीचर माने बा स्टूडेंट्स माने करिसेंती सो दैट बिलोंग्स टू दैट department. So that are we have to keep that one, we have to follow that one, and that one we have to keep that one. So for whenever request je tumar keteta UGC रे जेते बळे इवैल्यूएशन आसुची बा तांकर जेते बळे रिपोर्ट दवा पे पडुची जे ए वर्ष बा एनुअली केते आर्टिकल पब्लिश होइछे रिसर्च आर्टिकल केतेटा पब्लिश होइछे से अनुसार तुमरो रेटिंग होउची फॉर दैट रीजन वी हैव टू डू एंड एटी लाइब्रेरी रो सेटा होउची काम बा लाइब्रेरियन हैज टू मेंटेन ऑल दीस थिंग्स एंड यूनिवर्सिटी आर्काइव्स आई हैव टोल्ड यू आर्काइविंग करिवो बा तुमे जिनसडा को कोन करिवो ना स्टोर करिकि रखिबो फॉर फ्यूचर यूज contribute to long term preservation of scholarly output. आमे कौन करिबा ना आमर लाइब्रेरी तरफरु केमती लॉन्ग टर्म रे आगो को आमे लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ स्कॉलरली आउटपुट जहाँ स्कॉलरली आउटपुट आसीबो बा जहाँ लेखा आसीबो बा थेसिस आसीबो सेडा को आमे लॉन्ग रन पे बा आगरे केमती आमे यूज करि परिबा आमे परमानेंट सेटा को आमे ठीक भाव में रिजर्व करिबा प्रिजर्व करिकि आमे रखिबा नेक्स्ट देन अनदर इंपोर्टेंट इज योर यूजर सर्विसेस you know these are very traditional services as you have gone through the in the management बा रूटीन वर्क्स हम ताको कहिबा बा लाइब्रेरी जनरली हुए सब लाइब्रेरी समान टाइप रो आमे वर्क्स करछे बा रूटीन वर्क्स करछे. So likewise, this is called curriculum circulation reserves and reserves. Circulation and reserves. Circulation means कौन ना हमें जिते बड़े we are providing the books or information to the users. That is known as circulation. बा हमें तांको provide करचे बा तांको हमें दोउचे. आमे कौन करछे ना ताकू बेसिकली आमो लाइब्रेरी टर्म में इश्यू एंड रिटर्न कहूचे एंड दैट इज नोन एज सर्कुलेशन वी आर सर्कुलेटिंग आमे कौन करछे इश्यू करूचे एवं ताकू आमे रिटर्न करूचे पुणी वी आर रिजर्विंग आमे ताकू आनछे प्रॉपर रिजर्व्स करूचे बा ताकू आमे प्रॉपर प्लेस रे पुणी रिप्लेस करूचे पुणी जेतेबेल दरकार आमे ताकू दोउचे. सो दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन एंड रिजर्व्स. आमे कौन करछे ना फर्स्ट टाइम स्टोर करूचे आम लाइब्रेरी केमती बही आसुची आम कलेक्ट करूचे बाय परचेज बाय गिफ्ट आम लाइब्रेरी रोचे. सो व्हेन एवर वी आर कीपिंग इट दैट इज नोन एज आम स्टोर जेतेबेले करूचे सो बाय मीन्स ऑफ कलेक्शन आम पढ़ी कलेक्शन डेवलपमेंट कही. सो बाय मीन्स ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट आम कौन करूचे ना कलेक्ट करूचे बुक्स एंड नॉन बुक्स रीडिंग मटेरियल्स कलेक्ट कला परे आमे से होची कोन रिजर्व्स होची आमे रिजर्व करचे लाइब्रेरी. सो आफ्टर दैट वी आर मेकिंग सर्कुलेशन वी हैव ए पॉलिसी केमिति आमे सर्कुलेट करिबा. सो ऑफलाइन ने करिबा ऑनलाइन ने करिबा. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स बाय आमे सेतबेले पढिबा जेतबेले कंप्यूटराइजेशन हबो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सर्विस रे आमे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिबा एवं से सब जिंस को मैनेज करिबा. Then another one is the reference. I have told you what do you mean by reference. You are giving some services personally that is called as reference. And research consultations in person, virtual or chat. So you see reference means personal services. So personally you are giving some information आमे किछि व्यक्तिगत भाव रे तांको किछि सूचना प्रदान करूचे बा आमे तांको
कौन प्रकार सेवा प्रदान करूचे ताको आमे कहूचे पर्सनल सर्विसेज बा आमे ताको रेफरेंस सर्विस बा रेफरेंस कहूचे। रिसर्च कंसल्टेशंस गवेषणा जने करूचंती तांको पे कोन दरकार से को टॉपिक रे गवेषणा करूचंती सो आमे ताको कोन करिबा इन पर्सन्स 1-to-1 रिलेशन बसन को इंटरेक्शन आमे करिबा से आसिक लाइब्रेरी तुमठू रेफरेंस नेबे जे हमर कोन कोन जिंस अछि कोन आमे प्रोवाइड करिबा को जर्नल आमे मगौचे तांको सब्जेक्ट रे कोन बही अछि कोन पत्र पत्रिका अछि बा बुक्स एंड जर्नल्स अछि बा कोन सेवा अछि आमे ताको प्रोवाइड करिबा और व्हाट आर द साइट्स अवेलेबल बा हम कोन आमे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आमे कोन प्रोवाइड करूचे आमे ताको जणेबा। Virtual, that is remote, they will not come to the library, but we can provide them with virtually, we can provide the informations से हमरो information नहीं परिबे हमको interact करी परिबे, so by that way we can through social media and something else we can do that. So आमे तांको not physically virtually कहले there is absence of physical presence आमे ताको physically किछि करिबानी आमे इलेक्ट्रॉनिकली ताको आमे इंटरैक्ट करिबा। सो लाइकवाइज अब तुमे एबे कोठी अच्छा मु करूची सो इट इज ए वर्चुअल इंटरैक्शन बा आमे इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरैक्शन ताको आमे वर्चुअल इंटरैक्शन कहूचे। आमे चैट whenever we are in a live class तमर जहा प्रॉब्लम रहला तो डाउट रहला तुम मते पचारिबो तो से लाइब्रेरी कोन चाहूचंती आमु से तळे चैट करिवे लिखिबे सोशल मीडिया रे लिखिबे से व्हाट्सएप रे करि पारंती बा इंस्टाग्राम रे करि पारंती व्हाटएवर बा ग्रुप डिस्कशन करि पारंती बा ईमेल रे करि पारंती तेनु सेते बळे आमे तांग सहित will be have a chat with them that what is their requirement, so likely we have to go for that. Study facilities and learning spaces, you know, so we have to give them जो जिनस पढ़िया पे से चाहूचंती को विषय एडवांस लर्निंग तंग दरकार गोटे टॉपिक रे तो आमे तंगु प्रोवाइड करिया स्टडी फैसिलिटीज तंगु बही दबा जर्नल दबा सो एम्पल ऑफ थिंग्स आमे तंगु सब प्रकार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवा। देन अनदर इज लर्निंग स्पेसेस से जोडी बसिबे सो आमे गोटे तांगर क्वाइट प्लेस दरकार बा तांगर कंप्यूटर असिस्टेंस दरकार तां कोन एस्पेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पेक्ट रे दरकार अछि बा रेफरेंस सर्विसेज कोन दरकार अछि बा बुक्स कोन दरकार अछि आमे तांको सेही स्पेस रे सेठी आमे प्रोवाइड करिबा। वी हैव टू कीप ए स्पेस रिसर्च पे एंड अदर थिंग्स। सो अनदर इज वेरी कॉमन दैट इज रेप्रोग्राफिक, सो स्कैनिंग एंड मल्टीमीडिया सर्विसेज सो तुम करछो। रेप्रोग्राफिक is the copy system that photocopy. Reprographic means photocopying. So reprography means xeroxing, photocopying, whatever they like to take some xerox of certain pages of certain books को बहिरो से किछि पेज नेबे सो आमे तांकू कोन करिवा ना फोटोकॉपी करिवा से आइदर पेड सर्विस रे नै परिबे का फ्री रे तमे देई परिबो सो व्हाटएवर तमर जहा प्रोग्राम तम करिवो। स्कैनिंग भी सन करि परिबे स्कैनिंग करी की ई प्रोसेसर नै परिबे बस से मानकर यू कैन सेंड इट बाय देयर टू देयर मोबाइल और समथिंग एल्स और दे कैन स्कैन द books and they with memory chips or your pen drive whatever they can take. Then multimedia services, what do you mean by media? So media होची माध्यम, print media, non print media, electronics media ये media में बुझिबा तेणु और multimedia कहले that is audio, video, graphic ये सब जिनस अछि तेणु से जो थरे चाहि में से सब जिनस को हमें प्रोवाइड करिवा that is known as multimedia. Then outreach and user education programs. So outreach, when the users are not able to come to their library, you have to go to the users, readers. आमे कोन करिवा ना सेमानकर कोन दरकार अछि आमे सेटा को जानिबा तेनु that is your outreach and user education program. आमे कोन करिवा किछि नुवा बही आसिला
आमे कौन करिबा ना ताकू आमे हमर गोटे डिस्प्ले रे ताकू प्रोवाइड करिबा सेकेंड आमे कौन करिबा ना तुमको एजुकेट करिबा जे हाउ यू कैन यूज द कैटलॉग हाउ यू कैन यूज द एब्स्ट्रैक्ट हाउ यू कैन यूज द इंडेक्स हाउ कैन यू यूज द वेबसाइट्स हाउ यू कैन यूज all other things the facilities reference services whatever we have आमे सेमाने केमिति बेटर यूज करि परिबे सेथि पई आमे कोन करिबा we may arrange the classes librarian will take the classes so librarian is known as teacher's teacher काहे कि ना टीचर आसीबे लाइब्रेरियन पाखकू स्टूडेंट्स भी आसीबे लाइब्रेरियन पाखकू एडमिनिस्ट्रेटर भी आसीबे लाइब्रेरियन पाखकू काहे कि ना नॉलेज इज द पावर दे रिजर्व्स द नॉलेज सेमाने कलेक्शन करिसंती रिजर्व करिसंती ऑर्गेनाइज करिसंती एवं प्रोवाइड करिसंती सो दैट्स व्हाई we are saying library is a growing organism as an organism as the fifth law of library science by Ranganathan the library is a growing तर grow करूची तेनु समस्त को से अनुसार library will provide the informations then we will come to another one which is specialized modern roles so what are these are very advanced aspects that specially आमे library रे कौन सब करूचे emerging जो जो जिनसो आसुची एवं current trends कौन अछि वर्तमान current trends बा current services बा वर्तमान समय रे जो सर्विस चाली छि ताकू भी आमे प्रोवाइड करिबा कौन कौन जिनस दरकार पड़ुछि को बढ़िया सेवा दरकार पड़ुछि लाइब्रेरी सो इन दैट वे दैट इज योर स्कॉलरली communications you see scholarly communication scholars those who are the exactly those who are the involved in research activities and very deep studies they analyze the facts very scholarly by intellectually so आमे कौन करिबा ना इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन टू whom they want so what kind of books they require where they can get their real intent subject matter ए सब जिंस बा से माने जहा चाहू चंती से जिंस को आमे प्रोवाइड करिया विथ स्कॉलरली कम्युनिकेशन से मानकर इंफॉर्मेशन चाहिमा समटाइम्स दे आर प्रोवाइडिंग द क्वेश्चनर्स ताकर कोन क्वेश्चनर सर्विस दरकार अछि बा से तुम्हें भी क्वेश्चनर प्रोवाइड करि परिबो दे विल बी अवेयर ऑफ दैट तेणु बाय दैट वे देयर विल बी भलो कम्युनिकेशन तांका भीतर संपर्क सृष्टि होई परिबो जोगाजोग होई परिबो तेणु आमे तांकर यूजर्स मानकर कोन आवश्यकताटा भलो भाबरे जानि परिबा नो ओपन एक्सेस व्हाट डू मीन बाय लाइब्रेरी इज ऑफ टू टाइप्स एक्सेस बा आमे लाइब्रेरी की मुख्यतः दुईटा भाबरे दुई प्रकार रे आमे व्यवहार करे गोटा होची क्लोज एक्सेस आउट होची ओपन एक्सेस क्लोज एक्सेस कहले कोन ना तुमे लाइब्रेरी रो बही पाखु बा जो अछि रीडिंग मटेरियल्स पाखु जाई परिबो नाही तुमको प्रोवाइड करो यू विल हैव टू रिक्वेस्ट फॉर दैट एंड यू विल गेट द बुक्स बट ओपन एक्सेस यू आर फ्री टू गो टू द लाइब्रेरी कलेक्शंस लाइब्रेरी कलेक्शन पाखु तुमे फ्रीली मूवमेंट करिवो तुमे ता पाखु जीवो you will see the books and you will collect the books and then you will get issue and you will take so this is a physical process but in open access what happens जोठी तुमरो वेबसाइट्स रे अछि बा इंफॉर्मेशन अछि आम आर्काइव्स अछि बा तुमरो जोठी रिपोजिटरीज अछि सेटु कोन गला ना तुमे लाइब्रेरी तुमे डायरेक्टली एक्सेस करो तुमे सब लाइब्रेरी जो माने यूजर्स थिबे तांको access permission thibo semane jibe they will openly they will access the information services so open kaile khola bhabare semane use karibe tenu support open access publishing so seti se jaha chahu chandi publish kariya pai बा तुम फोरम रे जहाँ तंगर कौन नॉलेज हला कौन से माने व्हाट दे गेन न्यूली सो देयर विल बी अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन पब्लिश देयर थिंग एंड दैट ओपन एक्सेस पब्लिशिंग इज विल बी पॉसिबल से जहाँ चाहू चंती
लिखिबा पे बा तांकर जहाँ ऑब्जर्वेशन हैला they will write there, and there will be open access. Other people will see that yes, they can answer that if there are certain questions, if it is a new concept is coming or a new problem is coming, then can be a access. ସେମାନେ ବି ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ, ଆମେ ବି ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଧର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଲେଖିପାରୁଛ ବା ତୁମକୁ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ବି ଲେଖିପାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଆର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାନେଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିପୋଜିଟରିଜ, ତ ମୁଁ କହିଛି ରିପୋଜିଟରିଜ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିପୋଜିଟରିଜ ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟିଂସ जहाँ आम लेखा लेखुचे, आर्टिकल्स लेखुचे, बुक्स आसूची, थेसिस आसूची, एवढा होउची इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। तुमे ताको फिजिकली रखिबो किंबा तुमे इलेक्ट्रॉनिकली रखिबो बाय मेकिंग ए प्रोग्राम or by implementing some kind of softwares। तेणु इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज कहले आम इंस्टीट्यूशन रे कोन कोन जिंस बा जो लेखा गुड़िक सेटाका आमे रखिबा। And educate on author rights. You know, I have told you that about the copyright. You know, you cannot copy it all the things. So likely, what is the right of authors? So one cannot copy. So these are the facts. So things are coming electronically. There are different challenges are coming about the copyrights and also the author rights. So we have to protect the author's rights. How author right can be protected and what are the rules and aspects are there, we have to provide in detail to the writers or those who are writing, to the authors. Those are writing, who are the authors? Those who are writing the articles, those are writing certain kinds of intellectual aspects. So these are the aspects. Then another is your data service, research data management, data literacy, and support for big data or AI related projects. That you see, we have to provide data. We have to provide not only the books, not only the some kind of informations. We have to provide the data. Means any kind of informations they require. They are doing the research, whatever we have, whatever informations we have, so we have to provide what data we have. So we have collected the data, we have to provide research data management. And will be helpful that if they have some data and we have some data for comparison purpose, they will send to us and we will compare and we will provide some kind of informations by comparisons. So there can be data management. आमे कौन करिबा ना data collection करिबा, organize करिबा, सेमानकु भी आमे data provide करिबा. So this is another aspects of your academic library. Data literacy, so sources of data and how to use the data, all the things that is known as data literacy. And support for big data. So the huge data systems are there. How you have to provide the proper information to the exact pinpointed exhaustive expeditious information. By exact information आमे exact लोक पाखे पहुंचवा दरकार तार जहा दरकार अछि. तेणु otherwise कोन हबो ना, there will be, if he will search, there will be excess of informations, there will be less informations. So whatever आमे ताऊ पचारिबा जे प्रकृति रे तुमरा information केते दरकार एवं दे आमर searching को horizon हबो. So and how we will manage the big data process. So that is we have to support them. And I know the advanced will read the matters or will analyze the matter later on about AI, artificial intelligence, related projects. So we have to use artificial intelligence for certain purpose, for to help the readers. So AI related projects are there and there are AI tools are there, we will use and we will provide the informations. Then digital scholarship,
people are not only writing in general way, they are writing in electronic process. They are writing in different formats than the electronically, so by using their personal computers and all other things. So that is digital scholarship. Help with digital humanities, GIS, text mining and AI tools. As you know, your ChatGPT and Gemini are there as the AI tools. And text mining, that means searching. आमे ताकू केते सर्च करिकी आमे जानिबा. Then geographical information services, there are the different kind of services we have to provide. Then help with yes. So it is the matter is that, so help with the digital humanities. You see that somebody is not having that much of facilities to use the data. There is a data gap is there, happens. Somebody is not able to access the data. Somebody is not able to have that facilities. Unless until he has having the computers, all the things, he cannot get. So in that way, we have to extend the services and we have to make him educate that how he can learn. So that is the we have to provide extra effort. आमे ताकू कौन करबा ना extra effort देई कि आमे जो डिजिटल डिवाइड अच्छी बा ताकू आमे कहूचे जे जनम पाखे डाटा सर्विस पहुंच पारनी, ही इज नॉट एबल टू, ताकू आमे भल भाबरे प्रोवाइड करिया को चेष्टा करिबा. दैट इज वेरी इंपोर्टेंट as to help with the digital humanities. And embedded librarianship. Librarians integrated into academic departments. So what is embedded? So you have to get more involved. There are many departments. So we have to talk more about the universities libraries. आमे विश्वविद्यालय ग्रंथागार विषय चिंता करूचे जो थी कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी. डिपार्टमेंट लाइब्रेरी डिसेंट्रलाइज अच्छी, सबू डिपार्टमेंट लाइब्रेरी अच्छी एवं ता सहित अच्छी ना सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छी. तेणु से सेंट्रल लाइब्रेरी आमे कौन करबा ना जेते सबू अच्छी लाइब्रेरियंस इंटीग्रेटेड इनटू एकेडमिक डिपार्टमेंट, सबू एकेडमिक डिपार्टमेंट सहित they will get integrated by involved have. Or research teams डिपार्टमेंट सहित रिलेट हेबे एवं रिसर्च टीम को माने रिसर्च कहउचंती ताका रिसर्च टीम रो प्रोस्पेक्ट कोन गाइड स्कॉलर्स समस्त सहित इन्वॉल्व हेबे एवं ताका रिक्वायरमेंट जानिबे एवं तांको प्रोवाइड करिवे. बाय दैट वे रिसर्च विल बी प्रोग्रेसिव एंड our knowledge access will be more. हमारा अधिका knowledge access हबो बा हमें research development बा नुआ तथ्य हमें जानि पारिबा. AI and technology integration कौन करिबा ना लाइब्रेरी we have to make this library smart. हमें कौन करिबा लाइब्रेरी की हमें कंप्यूटराइज लाइब्रेरी करूचे बा हमें ताकू जो कंप्यूटराइज सेंस रे as per the generation 5th generation of libraries will apply computer applications करिबा एवं इंटरनेट सर्विसेस करिबा या एडवांस्ड आईटी थिंग्स वी हैव टू इन्वॉल्व. एज पर एआई इज कंसर्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस. The soft technologies are there, hard technologies are there. So all kinds of technology, advanced technologies, as far as possible, we will use. आमे सब इंटीग्रेट करिबा, ता भितरे आमे इंटीग्रेशन करिबा, लाइब्रेरी आमे इन्वॉल्व करिया. यूज ऑफ AI for metadata. Metadata is a very important term. You have to know, you might have read it. Metadata means information about information.
about information. Means who are the metadatas? Bibliography is metadata that provides the information about the books. So there are different kinds of metadatas. So this is that use of AI for metadata. For cataloging purpose, you will use artificial intelligence. He will collect the information and provide the informations. So very easily we can prepare the catalog. We can provide the references, catalogs, citations. The informations we are providing, that where we have collected the informations, or the that is known as the reference citations. So then it is your discovery, recommendation systems, and user services. You see, so there are, what are the new discoveries coming, then what are the new recommendation systems are coming in the prospects of technology. So we have to be advanced with the technology. We have to, that libraries are being advised to use certain systems, certain advanced systems of IT. Then user services, that are the different kind of services, that is social media services, group services, group discussions. So many kinds of services we are providing. So that we have to see that how we can integrate these things to our library perspective. आम लाइब्रेरी रे आमे सेटाक केमती नुआ नुआ एडवांस टेक्नोलॉजी आमे भर्ती करि परिबा, while addressing ethical issues like hallucinations and bias. That means we have to very democrat. We have to very that means it is you have to be very careful for every reader. It should not get biased. Means someone is taking and someone is not able to. जोटा कि हमें कहूतले जे there should not be any separate kind of services बा deprived of services. जे कई जंती सेवाटा को न पाई पारंती. आमे कौन करिबा ना समस्ते केमती सेवाटा पाइबे, समस्ते केमती बही पाई परिबे, समस्ते केमती तांकर information requirement को fulfill करि परिबे. सेटा books are for use. So there is a philosophy of library science जे समस्त को आमे better library service देई परिबा, that we have to go for, and that should not be gap. So that should not be digital divide कथा कह जाउची जे जणे information पाई परने ताको आमे provide करिबा. So we have to see there should be democratic ways of services बा आमे समस्तंकु provide करिबा that is the services, and सेठी किछि आम bias हबने गोटे जिंस को आमे कहा प्रति bias ही करिबानी, जनक प्रति करिबा और जनक पे करिबानी. आमे कोन करिबा ना आमे भेरी जेनरियस होबा बा समस्त को आमे लाइब्रेरी सर्विस टा प्रोवाइड करिबा. देन इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. व्हाट इट टेल्स ना क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्पेसेस एंड कलेक्शंस. सो आमे कोन करिबा इंक्लूसिव स्पेसेस आमे जेते सब लिटरेचर अछि आमे ताकू सेठी आमे इंक्लूड करिया पे वी हैव टू प्रोवाइड स्पेस. आइदर आमे सॉफ्ट स्पेसेस करिबा बा आमे हमर फिजिकल स्पेसेस इन द लाइब्रेरी वी हैव टू प्रोवाइड. आमे कोन करिया कलेक्शंस करिया. सपोर्टिंग डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशंस. वी हैव टू प्रोवाइड एवरीवन. आमे गोटे डिपार्टमेंट पे बही रखिबा अन्य डिपार्टमेंट बही रखिबा सेमति नै. वी हैव टू प्रोवाइड information for everyone. तांकर जहाँ जहाँ दरकार आमे डाइवर्सिफिकेशन बा समस्त पे आमे करिबा सब प्रकार information आमे प्रोवाइड करिया to everyone. Then sustainability and accessibility. Ensuring WCAG compliance and environmentally conscious
practices. आम कौन करिवा ना we have to make it sustainable. आमे जो library services करूचे that will make sustainable with a compliance is web content accessibility check. That web content जो आसुचे इटाला web content accessibility check get. So we have to evaluate the web content and how it is reaching to the users. So that is web content accessibility check get. So by that process we have to sustain the library and environmentally conscious practices which will not hamper the environment. We have to that means that should be piece of things, that should be no noise, there should be no bar of getting the things. So we have to conscious in that way. So and another by that way, now we have to shift to the current trends in academic libraries. So current trends, you know that what is now the things are going, we have to study that digital transformations, shift to cloud-based systems. You know, this is very important, that cloud-based system. Cloud-based system is a sharing system. Means you should not implement or subscribe or you should have all systems. You can share the systems. You can share with others. That is cloud-based system, or we are sometimes consortia. We are also using the terms in this. Ame tara consortia karuche ba ame konche the cooperation activities. So amara aguru podiche library cooperation. It's a type of thing. Eta sobo hochi IT based ba web based. Web based re cloud based. जोथरे कि तुम्हें information पाई पारिबो, तुम्हें सॉफ्टवेयर पाई पारिबो, एक्सेस करिबो एवं तुम्हें सर्विस भी पाई पारिबो. तेणु ताकू कहा गला cloud based. You can hire these things without purchasing. So AI assisted cataloging, cataloging or discovery. So AI assisted cataloging we have discussed before. What is catalog? The list about the reading materials. But AI assisted, AI will provide the informations very immediately by searching many informations, or it will go for the variety of data bases and will use and will also provide you the informations. That is they will assist you, that AI will assist you to provide the information or discovery. What are the new things that has been discovered? It also can be provided. And integrated research information system, CRIS. So these are the terms you have to remember. That is integrated research information system. Integrated research information means there are informations are going or research is going in separate departments. So you have to integrate that what kind of research is going, what kind of result is coming. So we can share the information and integrate. आमे ताकू कौन करिबा ना सेठी जहाँ information आसुची आमे ताकू अन्य मानकू शेयर करिबा कोटे कोटे प्लेटफॉर्म रे एवं आमे तार जहाँ जहाँ information requirement अछि ताकू आमे solution करि परिबा. Open science and equitable access. You see, open science and equitable access, emphasis on open access. I have told you the open access, close access. You have to, that is very important. Open access means
your information prospect or information reservoirs are open for you. Your library is open for you. You can directly use the library collections by going physically or electronically. Then open data. So there is no restrictions. You can use the data where it is there in the website, in the library site or whatever. And reproducible research. So by which we can, whatever we are making research, from that we have to make reproducible research, and more research will be happening, will be there. So there is open one, anyone can use, anyone can participate, and we can extend the research, or we sometimes it is known as relay research is possible. Then we'll come to AI literacy and competencies. So AI literacy is the fifth generation of computer aspect. So we have to train them. You have to train the users. Training the staff, they will be get efficient. Staff is also important as per the laws of library science. That is, books are for use. Every reader has it. Every save the time of the reader. So we have to save the time of the readers. So by how now we have to train these staffs very well. So these are the things, and training up the staffs by which they will get efficient users on responsible AI use. So they will not misuse, rather they will be very responsible. They should ask real question to the AI, particularly how they can put their questions and to the AI, and they will get their informations. As you know, artificial intelligence, how they can use properly. Then hybrid learning spaces, blending physical and virtual services post-pandemic. So pandemic, you know, that has gone. So there is no access, there is no traffic, there is no communications physical. So आमे हेतबेले कोन करूचे ना, आमे हेतबेले by sitting in one place आमे electronically access करूचे, by electronically by using your cell phones or using your computers, your networking system आमे ताकू करूचे. तेणु सेटिंग ना ब्लेंडिंग फिजिकल अर्थ आमे ताकू हाइब्रिड का कहूचे, जो बोथ थिंग्स मिक्सचर होउचे ताकू आमे हाइब्रिड कहूचे. तेणु ए हाइब्रिडिंग सिस्टम रे आमे कोन करचे ना फिजिकल जो लाइब्रेरी अछि आमे ताक बही की केमिति पहुंचै परिबा फिजिकल सिस्टम रे, एंड वर्चुअल सर्विसेज. वर्चुअल मीन्स विदाउट रिमोट वेयर, माने तुमे फिजिकल सिटी न जाई तुम पाखु इनफॉरमेशन पहुंचीबो, सर्विस पहुंचीबो, सेटा होची हमर वर्चुअल. तेणु these are the things that is known as hybrid. Hybrid is a mixture concept. So both, that is the blending of physical and virtual aspects. Then collection reassessment, moving away from just in case to just in time. That means we will not solve the case, we will solve in time, because you know time is very valuable aspect. If you will not make the solution timely, जेमती के हला जे पैंडेमिक के समय रे तुम्हारा जो माने मेडिसिन्स for a particular purpose जदि ना बाहरी पहुंचे, that will not solve the matters. So in time you have to provide. So जड़े चाहूँ जी बर्तन information आमे दिन ऑब्दे पारिले ताले सेटिंग ना तारा कोई solution आसीबने. तेणु आमे कौन करिबा ना, we are shifting, that is our libraries are getting smart. आमे कौन करूचे ना लाइब्रेरी की very advance करूचे. आमे लाइब्रेरी की आमे जोटा कहै छी fifth law of library science, library is a growing organism. Library is not a restrict one, it is growing always. तेणु आमे कौन करिबा ना हमरो जो सर्विसेस अच्छी, आमर जो एस्पेक्ट्स अच्छी
ताको आमे ग्रो करेबा एवं एडवांस करेबा मॉडल्स ड्यू टू बजेट कन्स्ट्रेंट्स एंड राइजिंग कॉस्ट सो दीज आर चैलेंजेस आर कमिंग आमे सबु टेक्नोलॉजी नबा सब कथा करिबा किंतु जेते बेले हमर फाइनेंस आसीबा आमे डिस्कशन करथले फंडिंग आसीबो सेटा को आमे मध्य ताको जो प्रॉब्लम अछि ताको आमे सॉल्यूशन करिबा सेति पई आमे भी किछि जिंस से अनुसार असेसमेंट करिबा जे कोन करले बेटर हेई पारिबो जेमती कहले जे आमे रिसोर्स शेयरिंग करि परिबा क्लाउड बेस को नै परिबा सो इन दिस कंटेंट वी हैव टू रीअसेसमेंट आमे करिया प्रकृति हम जो सर्विस दोउचे आमे यूजर्स हम सैटिस्फाई होउछन ना नै तेनु दीज आर द थिंग्स आमे तांकू नै के आमे करिबा देन पार्टनरशिप्स यू नो that we have to live with cooperation so localization globalization and sharing is now the very important matter जोटा के हमें बर्तमान समग्र व्यवस्था को आबा समग्र पृथ्वी रे से जिंस चली छे तेनु आमे कोन करबा ना बेटर आमे एते शेयर करबा समस्त को सहयोग करबा सेते बेले सेटा बेटर सर्विस हमें पाई पारिबा बा रिसोर्स शेयरिंग जोटा कि हमें आमर जहाँ रिसोर्स अछि संबल अन्य संबल को नहीं कि हमें जिते बड़े मिसई काम करिबा तेनु हमें कोलाबोरेशन करिबा सेते बड़े से जिंस कोलाबोरेशन विथ आईटी हमें खाली लाइब्रेरी रखि परिबानी लाइब्रेरी कंप्यूटेशन करिबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करिबा इंटरनेट सर्विसेज यूज करिबा बा एडवांस सिस्टम बा जहाँ जहाँ कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हार्डवेयर अच्छी सॉफ्टवेयर अच्छी सब जिन को इम्प्लीमेंट करिकी केमते बेटर लाइब्रेरी सर्विस दे परिबा ताको हमें करिबा सो वी कैन नॉट स्टे विथ ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट सो वी हैव टू एडवांस एंड इम्प्लीमेंट द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑफिसेस एंड टीचिंग फैकल्टी फॉर होलिस्टिक student success we have to take extra effort आमे कौन करिबा ना आमे जेते बळे कहूचे जे लाइब्रेरी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग आमे कहूचे लाइब्रेरी प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड नॉलेज इज द पावर एंड इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड दिस द सेंटर ऑफ नॉलेज जोटी के द सोसाइटी रो गोटे बड़ एस्पेक्ट होची लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी कौन करिबो ना रिसर्च पर्सपेक्टिव रे से काम करिबो रिसर्च ऑफिसेस को देखिबो टीचिंग फैकल्टी की भी देखिबो टीचिंग हाउ इट इज हाउ कैन इट कैन बेटर देयर विल बी टीचिंग फैसिलिटेशंस से कौन कौन शॉर्टफॉल होची को इन्फॉर्मेशन से पाई परनाती को बही तंकर दरकार पड़ुची कौन जर्नल दरकार पड़ुची बस से केमती ग्रो करि परिबे इन द एडवांस सिस्टम ताकू भी हमें प्रोवाइड करिया फॉर होलिस्टिक स्टूडेंट सक्सेस स्टूडेंट माने केमती आगु को जीवे ऑफ ए यूनिवर्सिटी of an university and in a school or colleges so we have to take very spirited aspect for the growth of libraries or growth of library services that is we have to get the partnerships ame will not will take associates ame समस्त सहित मिसी की काम करिबा आईटी सहित रिसर्च सहित टीचिंग सहित so we are not a separate wing rather we are a collaborating prospects so later on we'll discuss about other types of libraries public libraries and special libraries so this is for today and these are the things you have to go for today we have discussed that how library will function with this approach and proper collection sharing and proper yes as per the MCQ question तुमको आगुर दिया जाई छी प्रोवाइड कर देई छी I am going to give you the answers that हाँ अच्छा MCQ का ही सर है नेक्स्ट yes yes अच्छा आमे कोन तक पढ़िबा yes
Yes, give the answer of the first question. Answer କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? Yes. ଆମେ କହିବା correct answer. The correct answer is your B. So as you have studied, very simple, to support teaching, learning and research objectives of the parent institution. Parent institution माने जो institution अच्छी university जो library अच्छी सेटा को तारा parent body कहा जाउछि. Next. Answer the next question. Sir, answer कर लेगी प्ले. So the answer is your C. Academic libraries are institution specific and focus on scholarly resources we have discussed. Then the next. Answer the next questions. So the correct answer is your B. Teaching users how to find, evaluate and use information ethically. So we'll move to 4. Answer the fourth one. So the correct answer is your D, school library. We'll move to the fifth one. Fifth one, the correct answer is your B. Librarians working directly within academic departments or research teams. That is involvement. Next one is your sixth. Answer the sixth question. The answer sixth is, the correct answer is B. We'll move to the next seventh. Important, it may come. So that is, the answer is C, university
or research libraries. Next, 8th, so the correct answer is your B. The rising cost of scholarly journal subscription causing budget pressure. 9th, the correct answer is B, scholarly communications. Next, 10th, the correct answer is B, because they play a central role in knowledge creation, dissemination and preservation. So you try to practice all the things, the MCQ questions and also other concepts. So